Hello, hello everybody. I'm just checking my microphone settings. Give me a sec. देखते हैं हम कहाँ पहुँचे, क्या आया. Stop the music for a sec. मेरे को ऑडियो सुनना है. Let's see. Where is it? Okay. Okay. I'll be muting my desktop for a sec. Let's see. Hello. अच्छा नहीं, एक मिनट. Hello. I think I'm not audible on the stream. Am I? क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, मीटर चेक करता हूँ. आई थिंक आई एम ऑडिबल. मतलब if anybody is, I am audible. Okay, I am audible. I just need to jump in. एक गेन डाल देता हूँ because I think मेरा आवाज काफी कम है. I'll just add a small 3 decibel gain. This should be enough. मैं भूल गया हम क्या बना रहे थे. We were making, yep, we were making Go Microservice, and I'm on the gateway branch. I don't know what we'll be doing today. मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है. मैं भी भूल गया कि हमने क्या बनाया था. So let's see. हमने gateway बनाया था project wise, and make file was to run the gateway. ठीक है, and if I just run make, should build the gateway and start. ठीक है. Nice. Okay, let's get back our desktop audio and let's drop in a very light music. मैं cinematic सुनता हूँ, but I don't know what you guys listen to. So I'll just drop in something. Let's just drop in some ambient sound. Um, yeah, let's just drop in a dark ambient sound. Dark. What about dramatic? What about- Is it too loud? Guys, anybody in the chat? Is it too loud? I'll just drop it a little lower. ठीक है? Think it should be enough because we just need it for the ambience. जब मैं नहीं बोल रहा तो आप कुछ तो सुनाई देता रहे. I think that should be enough. मेरी आवाज नहीं दबेगी इतने में. ठीक है. Okay. So we are building our first microservice. मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि हम क्या बनाने वाले थे. So let's get back to the readme. ये था प्लान हमारा. ठीक है. And these are the few services जो हम बनाएंगे. ये प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन विल डू समटाइम इन द फ्यूचर. ठीक है. ठीक है, छोड़ दो. गेटवे हमने बना दिया. लेट्स सी फॉर गेटवे एक्सेप्ट्स कॉल्स. इट डज. एंड वी हैंडल लॉगिन एंड वी आर डूइंग अ नो ऑफ हैंडल. ओके. सो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं लाइट नहीं कर सकता क्या इसको? मच बेटर. ठीक है. एंड नाउ आई थिंक आई कैन बम्प द. ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ. हाँ. So
यहाँ पे we just had a no op, ठीक है, request path आता है and it drops back the path. इसको we could check क्योंकि इस पे कोई middleware तो है नहीं. So let's just see if we can post a request here. Okay, and I'll just do a curl x post. Also, by the way, guys, अगर post करना on curl, ठीक है, so you don't even need to write post. When you write x, it by default changes the method to post, ठीक है. X के साथ you can add patch अगर आपको post के अलावा कुछ करना है. And if you need to do a get, so you just skip x or you just write x get. Okay, we need a post on localhost 5k. I think that's where we are running. यहाँ दिख रहा है localhost 5k. Auth login, नो बॉडी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉडी रीडिंग तो चल नहीं रही, तो डजंट मैटर. एंड इट says no operation on auth login. Okay, that's what we did. Message no operation and path auth login. So our gateway is working. ठीक है, I'm happy with that कि at least हमने कुछ तो काम का बनाया. ठीक है, there are still a few things जो हम इस पे कर सकते हैं. One is request logging. ठीक है, basically a trace. ठीक है, अगर आपको trace का आइडिया नहीं है तो request trace is basically add request trace. Request trace is basically tracking a request from a request entry to request exit. ठीक है, these two things basically mean entry is basically when the request arrives at our doorstep, maybe gateway, ठीक है, क्योंकि that is where we are accepting request, and exit is when the request is completed. Okay, which could be response returned to the issuer. Okay, issuer or client, whatever you call it, and uh, the HTTP request session is closed. Okay, this is what we can term exit. Okay, इसके और भी terms हो सकते हैं. You might call it whatever you want. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. But the important thing is यहाँ पे that you have an entry point and an exit point, and when you trace this, okay, this whole span, entry से लेके exit तक request में क्या हुआ, that is a single trace event, and उसके अंदर you can make up multiple spans. ठीक है, so the order is basically something like this. You have a trace, ठीक है, and within a trace we have multiple span. Okay, and trace is basically, you could say, life cycle. ठीक है, मतलब that is how I usually use it. For मेरे लिए trace is life cycle of one request, and span is basically smaller segments, ठीक है, within the life cycle. तो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड ट्रेस एंड स्पैन. इसकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग यूज केसेस है. जितना मैंने यूज करा है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट यू क्रिएट स्पैन्स फॉर स्मॉलर थिंग्स. जैसे रिक्वेस्ट के अंदर कहीं बहुत अंदर जाके यू हैव अ सेगमेंट ऑफ समथिंग दैट यू नीड टू ट्रैक एक्सप्लिसिटली कि इस पार्ट का क्या हुआ. मे बी एक डेटाबेस कॉल होगी, मे बी एक बहुत ही एक्सटेंसिव डेटाबेस कॉल होगी, जिसको आप स्पैन में चेक कर सकते हो, दैट फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मच टाइम डिड इट टेक, डिड समथिंग हैपन, व्हाट हैपन. ओके, कितना टाइम लगा, क्या मेट्रिक था, वो चीजें आप देख सकते हो. दैट इज वेयर यू यूज स्पैन. ट्रेस इज बेसिकली रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट जा रही है वापस, उसके बीच में रिक्वेस्ट की जो लाइफ साइकिल थी उसमें क्या हुआ. ठीक है, सो यू कुड से ट्रेस इज एन अम्ब्रेला जिसके अंदर मल्टीपल स्पैन्स है, और हर स्पैन, हर ट्रेस आईडी एंड स्पैन आईडी के साथ यू कुड आइडेंटिफाई कि एक्चुअली क्या हुआ. Microservices में it's very important that you have some sort of connected logs. ठीक है, because अभी भी when we'll start building out our auth service, okay, यहाँ पे तो ऐसे ही बना लेते हैं. We have a go mod, we also have main.go, and let's just say we have an auth.go. Okay, so retaining the structure, utils में हम utils बना लेंगे इसके. So the go mod here looks something like this. I'll just copy paste it here. This is auth. Okay, that's it. ठीक है. Main.go is basically package name.
Okay, and I think यहाँ पर भी we could copy this. Sorry. Okay, new gateway की जगह we could just call it new or service and address. Okay, uh, इसको ऐसे रखने का reason is that you can override this अगर आपको चाहिए. You can, if you want, you can add yeah, environment variables. Okay, you can add a config file अगर आपको चाहिए. You can have a global and a local config कि there is some app level settings जो आपको चाहिए, कोई feature flag है या something. ठीक है, और you could have service local settings. ठीक है कि I want something very specific to service. So it depends कि कैसी configuration, what structure you're following. But all in all, uh, usually when you start building stuff, क्योंकि हम तो scratch से बना रहे हैं, so we have that privilege of building out however we want. Okay, so I think this and top was what we used, and then we had a new auth service. Okay, and gateway पे क्या होता है? So this is how we define gateway with an address and a mux. We use a similar structure. ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है. I also don't remember what we did. Yep, net HTTP. एंड देन वी हैव दिस. इसको हम कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट वी डिड हियर और व्हाई एम आई कॉपीइंग ऑल दिस, तो लास्ट वाले स्ट्रीम आप देख सकते हो. ठीक है, यू कैन जस्ट गो अहेड विजिट द लास्ट स्ट्रीम. उस पे वी डिस्कस्ड व्हाई वी आर बिल्डिंग इट लाइक दिस, एंड also you'll get some more info on uh, what we are trying to achieve here. ठीक है, because not everybody might be open to स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ठीक है, सबको सबको एग्जैक्टली ये चीज पसंद नहीं आएगी. आई नो दैट. तो इसीलिए आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म हियर. नो हैंडल भी हम बना सकते हैं यहाँ पे, which is basically a writer, response writer, and a request, which is a pointer. So when you have pointers, try not to have unnecessary references वहाँ. ठीक है. Okay, this is गेटवे मेन में ही था. मेन में ही था, क्योंकि और बनाने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे. एंड यूटिल्स है हमारे पास यूटिल्स डॉट टू में. आई जस्ट कॉपी दिस. ठीक है, दिस इज नॉट द बेस्ट वे. यू यूजुअली हैव अ शेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे एक शेयर्ड पैकेज होगा जिसपे जो यू विल बी यूजिंग यहाँ पे कि there is a shared package that you can reference in your mod local package. शेयर करके बना सकते हो. एंड वहाँ पे you could define these utility functions, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर सर्विस में होंगे. पर हमारा केस इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसमें अभी ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें क्या इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल दीज शेयर्ड रिफैक्टरिंग एंड थिंग्स ये हम आगे भी कर सकते हैं. ओके, आई जस्ट कॉपी दिस नो यहाँ पे. Utils is yes, auth wala utils. Also, make sure that within the auth I'm using the instances from auth wala package. ठीक है, not the gateway, क्योंकि obviously across modules नहीं use कर सकते हम. ये एक मॉड्यूल हो गया, दो मॉड, ये एक मॉड्यूल होगा. एंड सर्विसेज ये पूरा इज माई वर्क स्पेस. तो हम गो वर्क में मैंने यहाँ पे हम एक ऐड कर लेते हैं auth को, and that should be enough. I think यहाँ पे I can do this as well and then add or not sure if that will work or not. ये चलना चाहिए because that's how I think Go is written. कि वो simplicity है. Uh, let's add another command to run or win or services or and run win or. Alright. So we'll make auth and it starts up here. But auth का port is not this. ठीक है, auth का port will be something different.
बिकॉज हमारा गेटवे भी उसी पोर्ट पे है जिस पे ऑथ डिफाइंड है अभी फिलहाल, तो पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। बिकॉज इन कंप्यूटर साइंस आप पोर्ट शेयर नहीं कर सकते अनलेस इट इज अ शेयर्ड पोर्ट। ठीक है, बेसिकली यू कैन नॉट बाइंड अ पोर्ट टू टू डिफरेंट सर्विसेज। वंस अ पोर्ट इज बाउंड, आप उसको ही यूज करें। ओके, एक चीज और जो मैं कर सकता हूँ, आई कुड ड्रॉप दिस हियर and now I can continue because then I can restore chat यहाँ पे। yep, and do I oh, nice, so you have audio, okay, ठीक है। और क्या था, इसको और बड़ा, let the music be there, ठीक। Let's get back. Yep, we are healthy. Okay, so ये है auth, so auth running on port that and we'll start it on port 5010. Okay, इसको थोड़ा सा flexible कर सकते हैं। I'll add some notes here. Okay, services, I'll leave the request straight in there, so that anybody who looks at this will understand, okay, कि क्या बात होती थी। We are looking at improvements, and one of the improvements is use environment or config files to load service ports. Okay, I'll also write the use case. Environment is preferred because it can be changed easily when launching the service. Config files are convenient when the configuration is to be shared with multiple people. I think multiple people also doesn't matter. जब configuration shareable होगी, if shareable, right? Example, like app slash service names, prefixes, configuration options without secrets, okay, etc. So like सर्विस पोर्ट हो गया जो फिक्स्ड है, और यू माइट हैव अ डिफॉल्ट पोर्ट, ठीक है, वो ऐसी चीज है जो आप config फाइल पे डाल दोगे। when there is something that you might need to change dynamically, for example ports हो गए, ठीक है, या फिर secrets हो गए जो actually config फाइल पे नहीं जा सकते, वहाँ पे you might have an environment, ठीक है। स्मॉलर एप्स जैसे हम बना रहे, ठीक है, डजेंट मैटर, एनवायरनमेंट डाल दो, config फाइल डाल दो, config लोडर डाल दो, ठीक है, यू माइट यूज अ YAML फाइल, एक टॉमल फाइल, जेसॉन फाइल, कुछ भी रख सकते हो जिसपे भी आपके कन्फिग्रेशन कन्वीनियंट है, ठीक है। वहां से यू कुड पिक दोज थिंग्स अप एंड यू कुड रन इट, ठीक है, क्योंकि माइक्रो वी आर बेसिकली बिल्डिंग अ स्मॉल ऐप फॉर प्रोजेक्ट्स व्हिच एक्चुअली गो इनटू प्रोडक्शन। यू नीड टू डिसाइड कि क्या कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, क्या हार्ड कोडेड होगा एंड क्या एनवायरनमेंट पे जाएगा। ओके, सो इट्स अ टेक्निकल डिसीजन कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या चाहिए, बट आइडियली you'll be pretty comfortable in deciding कि किसी चीज को कहाँ रखना है। Okay, it's not that difficult. Also, I think we should check out abhi add, and let's create a new branch out of gateway and let's call it auth service.
Okay, ऐड करना was important, ठीक है, because वो untracked files थी and मैं anyway उनको ऐड करता, so it's better to it जब है वहाँ पे. So now we have our auth service with a login endpoint यहाँ पे ये. Okay, let's see कि हम exactly क्या कर रहे हैं. Main. Okay, so because the gateway only needs to decide कि request कहाँ जाएगी, it has nothing to do with request किसकी है. Okay, because let's say this auth slash asterisk, I don't know if asterisk works or not. Let's see if asterisk works. Go net HTTP wildcards, yep, that aren't regular, they're documented here. Okay. Okay, so basically they're saying that हम अपना खुद का handler बना सकते हैं. Okay, so let's use this. I think this should be good. Let's drop that वहाँ पे. This is only required in I'll just write this handler. Packet name. Okay, regex include कर लो, HTTP include कर लो, and I think that's it. Yep. Handle func, and now we can add a regular expression. Okay, append x dot routes. Yep, and then again appending h dot routes with this, and service में regex पे will be doing it. ठीक है, yeah. Pattern match, yes. ठीक है, this एक route matcher, we could make a route matcher. Okay, because there are ways. I think जो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है that is using a try. ठीक है, try एक tree structure है but string based है, so you might go into like breaking your whole URL in on slashes. ठीक है, slashes पे आपने break कर लिए, and उसके बाद you have a tree structure where you can construct a try or a tree. ठीक है, एक tree कह लो उसको, based on those parts. ठीक है, so you might have auth slash login and you might have auth slash asterisk. ठीक है, so asterisk becomes a wildcard but you also have login. तो जब request आएगी तो you have auth जो दोनों में common है, so that is one node. वहां से you have two children, one is a fixed login and the other is a wildcard. So what you could do is वहां से you could see based on whatever your like decision is कि कैसे match करना है. जो मैं matching करता हूँ, I usually match fixed strings first, then param string, then uh, and then like wildcards. ठीक है, asterisks or whatever you might use. ठीक है, because वहाँ पे regex and tree structure and parsing हमारे हाथ में है. You could use whatever symbol you want. Exclamation से wild card बना लो, तुम्हारी मर्जी है. Like it really doesn't matter. The asterisk is just a standard symbol because it in normal regular expression means anything. ठीक है, तो you could use that अगर वो करना हो तो. Okay, it's as simple as that. Let's see. Matcher, route serve, ठीक है. Let's see if this router would work because again इस route को इस handler को we could start using anywhere. ठीक है, because it satisfies the interface of a handler. Okay, these three structures satisfy the interface of a handler. Yes, it does. ठीक है, so
You could have like a handler as a regular expression handler. Okay, and the routes would be like empty. Make क्या था type इसका? Make empty pointer routes. Hmm. Okay, its type was an array of routes, so I'll just make slice of routes. So, uh, what happened though? अच्छा size देना होता है. So why does it matter? Why can't I make this route and this? Okay, and then let's say handler dot handle func. But no, but route. But even if this matcher works, I don't need this part. ठीक है, let's not do that. ठीक है, for us our services would be simple. So I have auth slash login and we'll construct simple services. ठीक है, um, and let's make a proxy service request. Okay, so this will do is basically what no did. ठीक है, let's keep no और ये होगा हमारा handler which will be returned. ठीक है, so I'll return a new function with this signature. Oh yes, yep, I need to return a handler यहाँ पे http dot handler func. Okay, because see handler func is basically a type alias for response writer pointer request which we are returning here. तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है. And यहाँ पे instead of no op, what I'm thinking is using something like this: proxy service request to auth service. The method will be login. Okay, slash login. So ऐसे I won't have to rewrite the whole structure again. And यहाँ पे I can have like a service name and a path. Okay, and nothing else. And यहाँ पे what I can do is create a new request. So I'll just make a client is http dot client, which I'll get from default client, or maybe just have a new request. Okay, method is post, which is exactly what I'll get from there. Okay, ये यहाँ से जो मुझे मिल रहा है ये वाला post. ठीक है, ये I'll do और login and the method is post. So path and method. Okay, so what I need to do is यहाँ पे और do we need to do this? इसकी जगह पे instead of using that, most probably I'll be with this will just be proxying request. ठीक है, HTTP proxy की तरह काम करेगा हमारा gateway. So we already have method. I'll just call it request method, and this will become r dot method. Okay, so the new request becomes request method as it is. ठीक है, URL is basically the path, but we also need the service URL. So service URL r dot path URL path. Okay, basically service URL we need it from a service registry. Service registry dot get service URL. So I'll get it by service name. ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री बनानी पड़ेगी. So let's make a service registry dot go. Just make it here. ठीक है, type service registry is a struct
with like map, like services, it will be a map of string to reg item or registry item, and we need a type for registry item. It will be service name. Service name already यहाँ पे है, but I'll still write a service name will be this. Service base URL, it will be this. Okay, and health, which for now I'll just give it like float. I don't know, float रख सकते हैं, because what I'm thinking is health would be the overall uh, health value, जैसे you see on YouTube when you like, ठीक है, उस टाइप से we could have a health value. इसका क्या यूज होगा, आई एम नॉट श्योर, मे बी कोई हेल्थ सर्विस बना सकते हैं, ठीक है, गेटवे का ही एक सबसेक्शन, एक हेल्थ सर्विस जो एक वो रूटीन पे चलती रहेगी, एवरी सर्विस को पिंग करेगी, एंड व्हेन देयर इज अ पिंग, ठीक है, द सर्विस हेल्थ वुड बी वन, एंड the health would be a time frame. So let's also have a time frame. Time frame is an int. Okay, so within this time frame, so within this number of pings, how many pings were successful and how many failed, वो हमें health value बता देगा, ठीक है. So if you say like let's say the time frame is 100, so last 100 pings में how what the health was, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है. लास्ट 100 पिंग्स को स्टोर करने का काम वो हेल्थ सर्विस खुद कर लेगी, वो हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द ओवरऑल हेल्थ वैल्यू वो अपने आप डिफाइन हो जाएगा, ठीक है. ऑल्सो वी कुड हैव एन इंक्रीमेंटल वैल्यू, जैसे इफ आई नो दैट इसको थोड़ा मैथमेटिक्स से भी वी कुड बी माइट बी एबल टू डू इट, ठीक है. Health may we have a time frame, maybe not have a time frame, we have an overall uh, health score, ठीक है, सर्विस का, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि लेट्स से योर सर्विस वाज डाउन फॉर क्वाइट सम टाइम बट इट्स बैक अप, ठीक है, तो उसका हिस्टोरिकल हेल्थ बहुत डिग्रेडेड होगा, बिकॉज इवन इफ इट वाज डाउन फॉर लाइक 200 पिंग्स, वो 200 पिंग्स का इम्पैक्ट आपको बहुत आगे तक दिखेगा, unless you recover it in a very short span, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं होता. So instead हमने इसे टाइम फ्रेम में बाइंड कर दिया कि let's say you have 100 ping का रेंज, तो if your service is down everything is losing, and then when service comes back up, वो 100 ping के रेंज में you start getting more healthy ping, and आपका हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होगा इन द लास्ट फ्यू टाइम फ्रेम्स, ठीक है. इसीलिए ये दो चीज़ें रखी है, इसको कैसे बिल्ड करना है वो विल हैव टू सी. ओके, सर्विस रजिस्ट्री आइटम का हमने एक वो बना लिया. ओके, देन हैव अ न्यू सर्विस registry which doesn't need anything. I'll just have a pointer to a service registry, return a new service registry. Okay, I think this is good. सर्विसेज को हम बना सकते हैं, create make a map of string and registry item. It will make it it will make an empty map for me. Then you have a new fun on service registry, pointer of service registry. I'll just make it S, and I'll say add service. We need a service name. I need service URL, and uh, maybe add a ping path. Service URL will maybe help URL or something like that. ठीक है, I don't know. Because I'm thinking on building a health URL. ठीक है. So instead of doing this, why not just accept item as a registry item? Okay, this would be much better. Error तो ये usually देता नहीं है because it's very local. S dot services S dot services में item dot service name will become the item itself.
ठीक है. This is to create make the lookup faster. ठीक है, और कुछ नहीं. Item service name से मैं बहुत तेज आइडेंटिफाई कर लूँगा इसको, because it's a map, तो उसमें lookup बहुत तेज होगा. Else, let's add another method for get service, where I need service name, nothing else, and I'll return a registry item. Else dot services, service name, which will be okay item. ये boolean होता है ना, this is okay and this is the item, and I do if not okay, errors dot new. I just say fmp as in f service person is not I'll just say unregistered service, unregistered service person s, and let's just call it service name. I can have it. Okay. And yes, because now it returns an error, we need to handle the error. Okay, and then I'll just return item and name. So this is what we did. I think this is good enough. Let's get some music again. Here we go. Here we go. Okay, so we have add service, get service. Maybe we could add some like check health or something. ठीक है, but वो बाद में बनाएंगे. Health service, we'll build it out later. We need a service registry. Yes. So building a gateway. When we're building a gateway, I need. Okay. So let's make this a part of our gateway. Pointer to the gateway. Okay. And this will be Jira request. क्या हो गया आपको? अच्छा, okay. So we need service registry. So I'll just say g.service registry. G is the gateway, and we need the service registry यहाँ पे. Service registry is a pointer to service. Okay, and यहाँ पे service registry will be new service registry. Okay, so service registry will tell us कि क्या get service. Okay, so now I have service URL and error, and we could check if error is not nil. So we had some error. Okay, so I could say write utils write error. Okay, this is my response writer. This is my error. Status code 500. Okay, so I'm not looking a lot into कैसे error handling होगी. बस हमने एक error बना रखा है जिसको हम use कर लेंगे यहाँ पे, and then we return. बस यहाँ पे कुछ नहीं करना. This is enough. Request method से हमने ये client बना दिया. And let's see. Service registry पे पहले हमें services add करनी होंगी. So that is another thing. Let's make S capital ताकि मैं इसे बाहर deal कर पाऊँ. Main.go. Okay, so यहाँ पे I need register services. G dot service registry add service. Item I will need registry item. Yep. And यहाँ पे I need service name, which is Auth, because our service base URL is localhost 55010. This is it, क्योंकि यहीं पे चल रहा है वो. And health URL, I'll just add another
localhost 5010/health. Okay, the health initially would be 1.0, or maybe just add the health to 0.0. Okay, and set the time frame to like last 100 things. Let's see. 1.0. We need a rolling average, okay, of the last 100 values without actually storing the last 100 values. That is what we exactly need. इसका मैथ्स बाद में करेंगे, ठीक है? Because पिंग हम अभी बना नहीं रहे, so let's just stick to it. So service based URL is this. तो जो भी आएगा that will be this URL plus the path. तो वो हम आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है? Now I have service history get service, okay, and then we have this new request. Then I have URL. So request URL will be this service 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 item, okay, service item dot service base URL plus slash plus yeah r dot path value name wildcard. No, not path value. I want this URL path. ठीक है, तो relative paths का पता नहीं. Let's see. Request URL. Why not just construct URL using it? URL new URL or something. URL parse join path. Oh yes, nice. So the request URL will basically be URL join path, ठीक है, यहाँ से, and instead of us joining वो join path कर देगा. This would return an error, right? And we do the same error handling. Okay, request URL भी आ गया, and then what else? Body is basically r dot body. This also returns an error which I'll handle later. New request, okay, and then I'll do http default client dot do new request, which is a pointer, and this will give me response, and I think it also gives me an error. Yeah. Okay, and I'll handle the error immediately. And the response, I think I'll just write the response body, because there's nothing else that I need to do. Response body dot. So can I not write w dot write? Let's see if we can pipe golang pipe response body to another response. Yeah, I do have this right close. Okay. Okay, there is an io.pipe. So there is a defer. ये तो बाद में डाल देंगे because we're not doing it. Body.close हमें डालना पड़ेगा because I am reading the body here. ठीक है, io reader. ठीक है. So after this, I'll just do a defer r body close. So when the request ends, it will close the body. Response body close को भी मैं defer कर लेता हूँ. Okay.
एंड इसको अब जल्दी से उसमें निपटा लेते हैं. Post request receive, ignore, response, okay, defer, and then it just copies. It's an IO dot copy. But do I need to copy? Just yep, IO dot copy. That's exactly what I want. So I have IO dot copy. Destination writer is W, and source is response body. What does this return? This returns something written. So I don't care about this. I just care about the error. And if error not equal to nil, I'll just log it. Log dot error f. Alright. अरे ये नहीं भाई. I want the default log. There is no error f. Log. There is only log dot print. ठीक है मैं log पर लगा देता हूँ. Or maybe add a print f and do something like this. Error writing response body to 20% the error. Alright, this should work. ये printf मार देगा, and then I have nothing to do, so I'll just return, or maybe just leave this as is. क्योंकि यहाँ आएगा differ कर देगा, body close हो जाएगी, lot of things happen. This should be good enough. ठीक है? So we are proxying the service request to the same method जिससे service receive हुई. URL join will also allow us to clean out any weirdness. ठीक है, जैसे इसने बोला resulting path cleaned of any dot slash dot dot slash, तो वो सब हट जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो वो सब की नीड नहीं है. तो बेटर, चलो ठीक है, कोई नहीं. लेट्स सी. auth लॉगिन है, प्रॉक्सी रिक्वेस्ट कर दी हमने, सर्विस रजिस्ट्री बन गई. ठीक है. नाउ टू प्रॉक्सी द रिक्वेस्ट स्लैश auth वाला जो लॉगिन है, उस पर इट गोज टू auth सर्विस and then it goes to slash login. ठीक है. Why am I doing it like this? इसको डायनेमिक भी किया जा सकता है to make formatted like first part is always the service name, second. That is because हो सकता है कि your first part is something different and your service name is something different. ठीक है. Because you might have multiple services or zero or one whatever. ठीक है. तो यहाँ पे वो आ सकता है. Also, I'm just saying auth. ठीक है. But you might have multiple services registered for all. ठीक है. हमारे मैप में the key is unique. ठीक है, obviously. So there's only one auth service. But you might construct your service registry such that कि तुम्हारे पास एक सर्विस नेम के लिए array होगा. ठीक है. So because what we had was service registry. What we had was a map of string to a key to a single service item. What you could do is make this like a slice of registry items and register multiple services, and then you can keep rotating between them based on parameters के round robin है या health के basis पे rotate करना है. ठीक है, whatever works for you. ये no up डाल दिया हमने, तो यहाँ से हमें no up मिल जाना चाहिए, whatever it might be. ठीक है. So यहाँ पे what we are doing is to connect our auth service running on 510 with the gateway service running here. Okay, let's see. यहाँ पे नहीं, we'll run it separately. We are in Go microservices. Yes. I want to make the gateway run first. Yes. And then make the auth. Okay, 510. Okay, nice. Also, I think we'll need a log whenever we register a service successfully. We might need a log. Yeah. So log dot printf service
registered person S, and I'll just call it item service. Okay, and another for the URL item service based URL. So whenever we register in your service, I'll get a log. मेरे को पता चल जाएगा कि सर्विस रजिस्टर हुई नहीं हुई. Okay, we could stop this and start it, and service registered auth on 510. Okay, let's see if the requests go through. यहीं से curl कर सकते हैं. curl-x post on localhost 5k auth /login. It says page not found. Okay, so something happened. And now let's debug, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसा कुछ तो होगा. ठीक है. It said something happened. So whenever I'm writing the error, I'll also do a log.printf. The reason is error. Okay, and I will %s str error, or not even this, the Python problem, error.error. So I'm writing an error with this. Okay, and exact error कहाँ आए ये तो नहीं पता चलेगा. But let's see if the gateway can do something. No, just start the gateway. ठीक है. Solve करके देखते हैं. It still says page not found. So let's start from the top. यहाँ आया मेरे को post auth login. So let's see if we are getting the request here. ठीक है. Request %s %s. So what I want is service name, not this. ये यहाँ पे request आ गई. यहाँ पे I want r dot method and r dot path. Let's see. थोड़ी बहुत debugging पे चलते. So we did get the request post auth login. Okay, it did work. Now let's see यहाँ पे क्या मिला हमें. Request URL, which is request URL. Then I think service item, and this should be v, and I'll just write something. Then I have new request body close, and yes, default client.do. I have response is %v response. Let's say response the error is %v error, if there is anything. Let's see. Request method. Okay. What about the auth? Auth service will listen to करता है. If it is listening on post/login, so can we actually hit directly? क्या मैं directly 510 login hit कर सकता हूँ? If it does work, so हमें auth service को कोई दिक्कत नहीं है. The problem is with the gateway not able to connect to the auth service. ठीक है. Let's see. Okay, response का error कुछ नहीं है. Okay, this. अच्छा, इससे auth strip करना था. Got it, got it. So what we did wrong वहाँ पे was to use the wrong join में URL path. What I needed to use was वाला path जो मैंने ऊपर provide किया है. And yeah, उसको दिक्कत नहीं. I think will be done. So auth login आया. Auth login पे we did do this. यहाँ पे भी I think we need some sort of logging. पर
भाई नहीं कर ही मान, but I did get operation from the microservice. ठीक है, तो we are hitting the microservice correct. ठीक है, हमारा माइक्रोसर्विस, हमारी पहली ऑथ सर्विस बन गई. नाउ यू शुड, इफ यू वांट तो ऑथ सर्विस का कैसा इम्प्लीमेंटेशन चाहो वैसा कर सकते हो. द इम्पोर्टेंट पार्ट वाज हाउ टू लिंक अप द गेटवे विथ द ऑथ सर्विस यूजिंग अ सिंपल प्रॉक्सी सर्विस रिक्वेस्ट. ठीक है, इसको कुछ भी बोल सकते हो. आई जस्ट कॉल्ड इट प्रॉक्सी सर्विस क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी वही करती है. ओके, एंड now you could also have another endpoint called or register or slash register. Okay, let's build the gateway, and for register it will give me a 404 page not found. Reason, because the gateway did not find any appropriate path here. इसने एरर दिया जो गेटवे ने एज इट इज रिटर्न किया. ठीक है, नेक्स्ट वाले में विल बी इन द नेक्स्ट स्ट्रीम आई थिंक विल बी बिल्डिंग आउट some crude implementation of I think JWT बिल्ड कर लेते हैं. आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली हम क्या बिल्ड करेंगे, बट आई थिंक वी आर गुड टू गो हियर. ओके, so I'll just add everything, commit and push it to the repo. Add our service and connect via TCP, HTTP, not TCP. We can push up the auth service. Nice. So our auth service is also done. I'll just take a note of what we did. Services that have specific tasks. Yes, auth. So service done. Implementation remains. Okay. We'll catch back in the next stream and implementation को भी wrap करेंगे. Okay, I'm taking this slow because my priority is not to build the service. My priority is to explain how we are doing it and why we are doing it certain way. ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री बनाने का रीजन क्या था, यू नीड टू नो. ठीक है, क्योंकि मैं तो बना दूंगा, यू माइट कीप कॉन्टेम्पलेटिंग कि क्या हुआ, क्यों बनाई सर्विस रजिस्ट्री, सर्विस रजिस्ट्री की जरूरत क्या थी. ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री वैसे भी क्यों होती है, सर्विसेज सिंगल है, मल्टीपल है, क्यों है, जो भी है. ठीक है, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर्विस रजिस्ट्री क्यों बनी, सर्विस रजिस्ट्री गेटवे पे ही क्यों बनी. ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, फिलहाल हमने हार्ड कोड किया, देयर आर अदर वेज. ठीक है, यू माइट हैव अ सेपरेट सर्विस विच इज कॉल्ड सर्विस रजिस्ट्री. ठीक है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हम खुद डिफाइन करें एवरी सर्विस दैट स्पिन्स अप. ठीक है, जैसे ऑथ सर्विस थी, जब वो स्टार्ट हुई उस टाइम पे एक सर्विस रजिस्ट्री पे जाके वो खुद की इंफॉर्मेशन सेटअप कर देगी. ओके, वहां से देन द गेटवे could connect to that service registry, get information about running services and then decide कि कौन से वाले पेज. ठीक है, this way I don't have to manage and I am also more scalable. क्योंकि अगर कल को मेरे को एक दो और सर्विसेज और चालू करनी है तो आई हैव टू गो अहेड एंड रजिस्टर दोस. ठीक है, ऑल्सो इट्स नॉट डायनामिक क्योंकि मैं रजिस्टर करूंगा तो आई माइट फंबल अप द पोर्ट्स. मैंने 5010 की जगह 5100 लिख दिया एंड नाउ द सर्विस इज नॉट कनेक्टिंग. ठीक है, बट जब सर्विस पिन अप होगी तो उसे खुद का पोर्ट पता है, उसे खुद का यूआरएल पता है, उसे खुद का बेस यूआरएल पता है. ठीक है, अगर नहीं पता है तो यू कुड डिफाइन दीज थिंग्स क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसी होंगी. इफ दे आर इन द सेम नेटवर्क लोकल होस्ट भी चल जाता है. ठीक है, इफ दे आर अंडर सर्टेन वीपीसी तो तुम वीपीसी बता सकते हो उसको कि ठीक है यू आर इन दिस वीपीसी वाया द एनवायरनमेंट वेरिएबल. ठीक है, एंड वहां से यू विल बी एबल टू रैप अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग कि मुझे सर्विस रजिस्ट्री क्यों चाहिए, क्या होता है सर्विस रजिस्ट्री का काम. ठीक है, अगर मेरी ऑथ सर्विस डाउन हो जाती है किसी वजह से, मान लो कोई एरर आया, सर्विस क्रैश हो गई, व्हाट यू डू. ठीक है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सर्विस बंद हो गई. सर्विस जब भी सर्विस बंद होगी तुम्हारी सर्विस रजिस्ट्री उसे पिंग करेगी, उसे वो सर्विस नहीं मिलेगी. ठीक है, उसे वो 504 का गेटवे एरर आएगा विच मीन्स कि सर्विस है ही नहीं वहां पे. सो दैट वे क्योंकि ये एरर
रीस्टार्ट के टाइम भी आ सकता है, तो यू डोंट नो कि ये एरर परसिस्टेंट है या नहीं है। बट धीरे धीरे जब सर्विस डाउन होगी तो विद इन 100 पिंग फ्रेम्स तुम्हारा हेल्थ जीरो हो गया है एंड नाउ यू नो कि सर्विस इज डेड। ठीक है, सो एक थ्रेशोल्ड लगा के तुम सर्विस रजिस्ट्री पे ही एक वो डाल सकते हो कि ठीक है माई सर्विस इज अंडर 30% हेल्थ, ठीक है, विच मीन्स 0.3 जैसा कुछ। एंड देन यू कुड से कि यार 30% हेल्थ हो गई है, आई नीड टू नोटिफाई समवन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, जो भी है, ठीक है, डेवलपर, जो भी है, यू नीड टू सेंड इन अ नोटिफिकेशन एंड यू नीड टू स्टॉप दैट सर्विस। ठीक है, एक स्टेटस रख लो कि सर्विस स्टॉप्ड है क्या, एंड यू डोंट स्पैम द नोटिफिकेशंस, एक बार भेजा, ठीक है, एंड देन एक फ्लैग मार्क कर दिया कि मैंने नोटिफाई कर दिया है, एंड देन यू कीप पिंगिंग। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे नोटिफिकेशन के बाद वो सर्विस वापस आ जाए, बट नोटिफिकेशन से ये पता चलेगा कि द सर्विस हेल्थ वाज अंडर 30%। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हम आगे बनाएंगे, स्लोली बनाएंगे, एक एक हिस्से को बनाते जाएंगे, एक एक हिस्से को समझते जाएंगे। आई एम नॉट बिल्डिंग अ बिग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर टाइप ऐप, आई एम बिल्डिंग स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जिससे आपको फंड अकाउंट में। ठीक है, ऑथ सर्विस बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, हर कोई ऑथ सर्विस बनाता है। मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि गेटवे से ऑथ तक रिक्वेस्ट कैसे पहुंच गई एंड वापस आई तो वो डेटा वापस कैसे चला गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझना है, गो बैक इन द स्ट्रीम, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाओ एंड जहाँ पे हम प्रॉक्सी सर्विस रिक्वेस्ट बना रहे थे उसको देखो, स्लोली देखो, समझो, खुद लिखो, अपने आप के लॉग्स लगाओ जैसे हमने डिबगिंग के टाइम पे लगाए थे। ठीक है, एंड चीज़ों को समझो कि मैंने वो क्यों किया जो मैंने वहाँ लिखा। ठीक है, वो अभी और एक्सटेंडेबल है, वो अभी और फ्लेक्सिबल, उसे और छेड़ा जा सकता है, उसे और डायनामिक किया जा सकता है। ठीक है, मैंने ऑथ सर्विस का नाम डिफाइन कर दिया, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऑथ प्रीफिक्स डिफाइन कर दूंगा कि कोई भी सर्विस जो ऑथ से शुरू होती हो, इफ देयर आर मल्टीपल रजिस्टर्ड, तो उसको यूज करो। ठीक है, बट देन तुम्हारी सर्विस रजिस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तुम मैप नहीं यूज करोगे, तब तुम ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर फेच करो यूज करो या एक प्रीफिक्स बेस्ड स्ट्रक्चर यूज करोगे। ठीक है, तो इट, और प्लस तुम्हारी सर्विस रजिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसे बदल सकता है कि यू माइट ओनली हैव द प्रीफिक्स एंड देन यू माइट हैव सर्विस आईडी जो रिक्वेस्ट आइटम था उसके अंदर, एंड द रिक्वेस्ट आइटम नाउ बिकम्स एन एरे। ठीक है, या स्लाइस इन गो टर्म। ठीक है, तो देर आर चेंजेस जो तुम धीरे धीरे करते जाओगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ ये हुआ, जो भी हुआ वो क्यों लिखा गया। ठीक है, लेट्स गेट बैक to the work and I'll get back next weekend। ठीक है, लेट्स कैच अप। मीनवाइल जो अभी हमने करा उस पे सोचो, उसको समझो, एंड अगले स्ट्रीम में हम ऑथ इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे एंड हम इसको सॉलिड ग्राउंड्स पे ऑथेंटिकेट करवा देंगे, बिकॉज अगेन ऑथ इम्प्लीमेंटेशन में भी एक चीज़ और होगी, दैट द ऑथ सर्विस विल वैलिडेट द टोकन। ठीक है, चाहे सेशन हो या टोकन हो, वट एवर, ऑथ सर्विस का ही काम है वैलिडेशन का। सो यू विल बी बेसिकली you'll basically be using the auth service within a different implementation। ठीक है, क्योंकि अब तुम auth सर्विस को मिडिल वेयर में डाल दोगे कि भाई ये है auth सर्विस के पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे एंड पॉइंट पे हिट करो, वेरीफाई, वैलिडेट, व्हाटएवर। ठीक है, और वहां से जब जो भी रिस्पॉन्स वापस आएगा उसके बेसिस पे यू डिसाइड कि तुम्हें प्रोसीड करना है या नहीं, बेसिकली वेदर द टोकन इज वैलिड और नॉट। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन में ये काम गेटवे पे कर देते हैं, बट ये गेटवे का काम नहीं, गेटवे का काम वैलिडेशन का है ही नहीं। गेटवे का काम बस इतना है कि सर्विस रिक्वेस्ट आई कहाँ जाएगी, ठीक है, इसे फुलफिल कौन करेगा, एंड बस इतना डिसाइड करने के बाद वो अंदर चला जाता है। ठीक है, यू माइट हैव अ सर्विस रजिस्ट्री विद इन ईच ऑफ योर माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि ऑथ को किसी और की जरूरत है या नहीं आई डोंट नो, बट फिजिक्स वाले को मैथ वाली सर्विस की जरूरत होगी। ठीक है, ऑल्दो हम बहुत ही बेसिक सी चीज बना रहे हैं, बट फिजिक्स सर्विस को मैथ्स की जरूरत होगी। सो अगले दिन हम, हो सकता है कि सर्विस रजिस्ट्री को रिफैक्टर करके पेरेंट मॉड्यूल में डाल दें, हम हो सकता है एक शेयर्ड मॉड्यूल बना दें, गो माइक्रो सर्विस शेयर्ड, और उस शेयर्ड मॉड्यूल को हम हर सर्विस से कनेक्ट कर दें, सर्विस रजिस्ट्री उसमें होगी, यूटिलिटीज उसमें होंगे। ठीक है, तो इन दैट वे you'll be happy to do a lot of things, ठीक है, विदाउट रीराइटिंग द होल कोड। अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि फंक्शनैलिटी सेम है बट 2 लाइन का चेंज है,
you might add a flag, ठीक है, या you might make a wrapper on the implementation with extra parameters और original वाले का as it is वैसा ताकि जो हमने पहले से लिख रखा है वो ना टच हो बस, and then you might start using the wrapper, ठीक है। प्रॉक्सी सर्विस रिक्वेस्ट में तुमने प्रॉक्सी सर्विस बनाया, सर्विस नेम ले लिया, बट हो सकता है कि तुमने इतना लिख दिया है कि अब यार हर जगह बदलना इज नॉट फीजिबल, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट टचिंग द इम्प्लीमेंटेशन, एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, और तुम उसमें ही उसको प्रीफिक्स बेस्ड बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो स्लोली स्लोली वो बन जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। बस जो कर रहे हो तो समझो, स्लोली करोगे तो समझ में भी आएगा, काम भी हो जाएगा, ओके। विल गेट बैक in the next stream. See you all. ठीक है? And keep building. We'll keep learning. Bye.